समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस रूल एक्सेप्शंस जो हम नॉर्मल तरीके से डिप्लॉय करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो फॉर एग्जांपल हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। लेट्स वेट फॉर प्रोजेक्ट लोडिंग। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट लेते हैं। हमें पता है, हम सब अवेयर है, हमने बहुत काम किया है इस प्रोजेक्ट पे जब हम इनिशियल फेज पे थे, लर्निंग फेज पे थे यूआईपाथ के। तो हमारे पास एक वेबसाइट है यूआईपाथ, सॉरी आरपीए चैलेंज, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर, इसमें एक एक्सेल फाइल होती है, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इस फाइल को हम यूज करते हैं। ओपन कर लेते हैं, इसमें कुछ चेंजेस में थोड़ा सा कर देता हूँ एज पर द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा चेंज किया है मैंने। इन्फॉर्मेशन वही है सारी की सारी। यहाँ पर मैंने भी फोन नंबर की जगह यहाँ पे मैंने रख दिया अमाउंट, दैट्स इट ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक बिजनेस रूल को समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर मल्टीपल बिजनेस रूल्स हैंडल करने हैं, तो आप कैसे मेंटेन करते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर? कैसे मेंटेन करते हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है। बट अगर मुझे मल्टीपल बिजनेस रूल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे ईमेल है मेरे पास, राइट। अगर मेरे पास ईमेल है, वो मुझे मेंटेन करना है। ठीक है, अगर ईमेल स्पेसिफिक ईमेल आता है किसी का, ये वाला ईमेल है, तो हम प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, कंसिडर करेंगे बिजनेस रूल एक्सेप्शन। या फिर स्पेसिफिक फर्स्ट नेम या स्पेसिफिक लास्ट नेम आता है, या कोई कंपनी आती है या रोल इन कंपनी आती है। ठीक है, अगर इन कंपनी से कोई रिक्वेस्ट आती है तो विल नॉट गोइंग टू प्रोसेस इट। ठीक है, तो हम ये चीज कैसे कंसिडर करते हैं, डेवलप कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो हम सिंपल सा काम कर लेते हैं। अगर अभी आंसर नहीं आया जब तक सोच लो, मैं यहाँ पर एक रीड प्रोसेस बना देता हूँ। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं अभी कॉन्फ़िग फाइल को यूज नहीं करूंगा अभी इस समय। ठीक है, क्योंकि हम इतना टाइम नहीं लेंगे कॉन्फ़िग अपडेट करेंगे, राइट। डायरेक्टली हम हार्ड कोडेड यूआरएल दे दूंगा मैं अभी। वी ऑलरेडी अवेयर, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट।
रीड वर्कबुक में से हम उठाएंगे रीड रेंज. We are going to read this challenge. Sheet 1. Okay, and we can upload entire sheet to the queue. Sorry, bulk upload we can use. We can create a variable, go to the property, challenge PT. We have this, but let's do one thing. What we can do, we can remove that RPA challenge and we can create a fresh queue. So let's open orchestrator. Click on create new and you can create a new queue. Yeah, same folder, right? Shared folder. Okay, so we are ready with the queue. Now what we can do, we can upload the data. Okay, now we can jump into the. अच्छा एक चीज और कर लेते हैं. Let's do one thing. हमें queue का name और अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि queue से हमें डेटा गेट करना है. So that we can update into the config file. For that we can utilize the config file. So we can go to the data. We can on config and you click on settings and we can mention the and we can mention shared. That's fine. I'm not going to update URL or anything. Okay, so directly once everything is uploaded into the queue, then we'll get a transition, right? One by one as per the RE framework. Now in process it, what we are going to do, we are going to update the information. So we can open this workflow. And we can add, I'm just going to add only a single activity, right? Single information I'm going to explain this because we are not going to complete the entire process. So I'm just going to use single. So I can use type into with classic activity and a modern activity, right? For modern, we know that we have to use application. So we can put here, we can indicate on the screen where we have RP challenge opened. And should not close. So close option never. We are not going to close it here. Type into. You can add here type into. So कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फोन नंबर ही अपडेट करवाता हूँ. ठीक है, फोन नंबर इन द सेंस अमाउंट, राइट? मेरे पास अमाउंट है, उसको अमाउंट को मैं यहाँ पे अपडेट करवाना चाहता हूँ.
राइट, कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, अब वो अमाउंट हमारे पास आएगा कैसे? राइट, हमें पता है वो अमाउंट कहाँ से आएगा, क्यू में से आएगा। राइट, तो अमाउंट का जो की होगा वो होगा 10। हम क्या मेंशन करेंगे यहाँ पे? मेंशन करेंगे हम इन ट्रांजैक्शन आइटम डॉट स्पेसिफिक कंटेंट ब्रैकेट ओपन अमाउंट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। अब आप लोग मुझे बताओ कि मुझे अगर यहाँ पे बिजनेस रूल मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का ईमेल एड्रेस या किसी का ईमेल एड्रेस में जे स्मिथ है, या कोई एम्प्लॉय आईटी सॉल्यूशन से है, राइट, तो मैं उसकी प्रोसेस रिक्वेस्ट को कंप्लीट नहीं करूंगा। आई विल कंसिडर इट एज ए बिजनेस एक्सेप्शन। राइट, सो हाउ वी कैन डू दिस? हमें पता है कैसे करना होता है, बट हम कैसे करेंगे? मोहन, अंकित। सर इसके ऊपर ही चेक कर लेंगे ना, इफ कंडीशन लगा के या यहाँ पे डिसीजन कंडीशन लगा लगा के। देंगे, हाँ है ना? हाँ, या यहाँ पे डिसीजन चलो, लगा दीजिए ऊपर, हाँ या चेक कर लेंगे अगर वो इफ आईटी कंडीशन लगाते एनालिस्ट हैं। है तो बिजनेस रूल एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, अगर वो नहीं है तो आगे आगे अपडेट कर दे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको मेंशन कर दोगे, राइट, जो भी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंपनी नेम। कंपनी नेम इक्वल टू आईटी सॉल्यूशन, राइट। देन देन अब क्या? थ्रो लगा देंगे बिजनेस एक्सेप्शन। थ्रो लगा देते हैं, लेट्स ट्राई थ्रो। क्या लिखना है यहाँ पे? न्यू बिजनेस रूल एक्सेप्शन, हम्म, जो भी कस्टम मैसेज देना हो कि सिर्फ मैं अभी बीआरई लिख देता हूँ। ठीक है, बिजनेस रूल एक्सेप्शन ओनली, वी आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी कस्टमर्स, राइट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर मुझे मेंशन करना है कि वाटर फ्रंट जो है, अगर ये भी आता है तो बिजनेस रूल एक्सेप्शन होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? बिजनेस रूल एक्सेप्शन होना चाहिए, ये भी होता है तो हाँ, वाटर फ्रंट से एंड है ऑल्सो लगा इंफॉर्मेशन। के, एंड ऑल्सो लगा के इसी में ऐड कर देंगे। क्या लगाकर? एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो। या ओके, और ओके, और लगाएंगे और। ठीक है। मुझे अगर यहाँ पे शुगर वेल भी लगाना है तो फिर से वही। हाँ, जितने भी लगाने होंगे सर और लगा के कर देंगे। ठीक है, अगर मैंने ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दिया, देन अगर फिर से मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, मुझे ना ये एचआर मैनेजर या फिर ये जो है टेक डेव, ठीक है, यहाँ से अगर रिक्वेस्ट आती है, फॉर एग्जांपल इसको कंसिडर करो कि अप्रूवल रिक्वेस्ट है, कि यहाँ पर ये अमाउंट इन्होंने रेज किया, क्लेम का अमाउंट है उन्होंने। अब मुझे ना अप्रूवल बताना है कि अब भाई इसमें फॉर एग्जांपल ये इजी अप्रूवल है, बॉट इसे अप्रूव कर सकता है, नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो एटलीस्ट वो हमें बता दे कि बिजनेस ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर हमें किसी ह्यूमंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे कंसिडर करेंगे?
मतलब अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट इन फ्यूचर आती है कि इन कंपनी से हमें अगर रिक्वेस्ट आती है तो ये इनके जो अप्रूवल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, राइट, इनको इजीली हम बॉट अप्रूव नहीं कर सकता, राइट, इट विल कंसिडर एज अ बिजनेस एक्सेप्शन। इन दैट केस हम कैसे एग्जांपल दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, क्योंकि हमारे पास तो बिजनेस एक्सप्रेशन जो है वो और आ रहे हैं इन फ्यूचर में, राइट? हाँ सर। इसको डायनामिक यस बनाना सर। होगा। तो हम कैसे करते हैं? नहीं करते कैसे हैं अब तक? अभी तक तो हम ऐसे ही करते आ रहे थे ना, यहाँ पे हम बिजनेस रूल एक्सेप्शन यहाँ मेंटेन कर देते हैं, करेक्ट? एक चीज पूछना है हम्म। ना, बिजनेस रूल एक्सेप्शन करते हैं या बिजनेस एक्सेप्शन सिंपल भी करते हैं? नहीं, बिजनेस रूल एक्सेप्शन ऐसे ही हम करते हैं मेंटेन, ठीक है। अच्छा, हाँ बिजनेस एक्सेप्शन नाम से भी होता है क्या कुछ? नहीं नहीं, बिजनेस रूल एक्सेप्शन ही बोलते हैं वो। अच्छा ठीक है। बिजनेस एक्सेप्शन हम कहते हैं इसलिए हम समझ जाते हैं कि वो वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस रूल एक्सेप्शन, राइट? ठीक है ठीक है। ठीक है। तो अब हो सकता है इसका एक तरीका और है कि हम एक एक्सेल फाइल भी मेंटेन कर लें, वहां से रीड आउट आए, करेक्ट, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब इसी चीज के लिए यूआईपाथ ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको ज्यादा नहीं मिलेगी कहीं भी, ठीक है। अब यूट्यूब पे भी अभी आपको नहीं मिलेगा ज्यादा कुछ, ठीक है। सो कोई लेट्स नया टॉक अबाउट एक्शन दैट। इंट्रोड्यूस हो गया? हाँ जी। कोई नया एक्शन इंट्रोड्यूस हुआ? हाँ हाँ, नया, इसीलिए इसीलिए मैंने क्लास रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर एक नया, आप अभी भी प्रीव्यू में है, आप चेक करो अभी ये, इसलिए इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये प्रीव्यू में अवेलेबल है। सो इसीलिए हम जब ये प्रीव्यू हो तभी हम इसके बारे में चेक कर लेते हैं एक्चुअली होता क्या है, कैसे इस पे काम करते हैं, राइट? सो अभी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी नहीं है कि किस तरीके से हो, बट जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, राइट? सो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है बिजनेस रूल एक्सेप्शन। सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पर एक बिजनेस रूल एक्सेप्शन की लिस्ट बना सकते हैं और यहाँ पर हम उसे अपलोड कर सकते हैं, राइट? हमें क्या करना है, यहाँ पर बिजनेस रूल एक्सेप्शन की एक लिस्ट बनानी है और वी नीड टू अपलोड इट हियर, ठीक है। और यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन, जब भी नई इंफॉर्मेशन आती है वी कैन ऐड इंफॉर्मेशन, वी कैन ऐड दैट इंफॉर्मेशन, वी कैन अपलोड द अदर इंफॉर्मेशन, वर्जन्स कैन चेंज, राइट, ऑफ दैट फाइल, राइट? जिस इंफॉर्मेशन में, जिस फाइल के अंदर हमारे पास बिजनेस रूल एक्सेप्शंस होंगे, उस फाइल के अंदर हम अलग अलग इंफॉर्मेशन और ऐड कर सकते हैं और अलग अलग वर्जन के साथ इसे अपलोड कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग, we need to click on add business rule, so we need to add a business rules here, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस बिजनेस रूल एक्सेप्शन का नाम रख देता हूँ आरपीए कंपनी चैलेंज बीआरई, ठीक है। कंपनी नेम। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं दीज आर द बिजनेस रूल, ठीक है। जो भी डिस्क्रिप्शन हमें देना है वॉट एवर रिलेटेड विद द प्रोजेक्ट वी कैन मेंशन द डिस्क्रिप्शंस हियर, राइट? नाउ we can see we have a business rule file here we need to upload, but we cannot upload Excel file, right? We cannot upload CSV file, we have to upload DMN format file, dot DMN, decision model notation। इस फाइल में क्या होता है, हम डिसीजंस को क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, और बिजनेस रूल क्या है, डिसीजंस हैं, राइट? अब हमें क्या करना है, हमें पूरा का पूरा डिसीजंस क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ सिनेरियो चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल सो मेरी एक्सेल फाइल है, इसमें मैं मेंशन करता हूँ, अब स्पेसिफिक अमाउंट वाइज भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ कि अगर इफ greater than 10,000, right? So it will be considered as a complex. If equal to this amount, it is also considered as a complex approval, right? कि ये इतना आसान नहीं है इसको अप्रूव करना, राइट? ये अमाउंट हम आसानी से अप्रूव नहीं करेंगे, और हर अमाउंट के अकॉर्डिंग अगर ऐसा हो गया कि हर अमाउंट के अकॉर्डिंग हमने एक लिस्ट बना दी कि ये अगर ये अमाउंट है, अगर ये अमाउंट है, अगर ये अमाउंट है, तो इट विल नॉट बी इजी, राइट? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाएंगे, इसके लिए हमें एक पूरी डिसीजन फाइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब आप एक्सेल में क्या करते हो, एक्सेल में आप सिर्फ लिस्ट मेंटेन कर सकते हो, अमाउंट मेंशन कर सकते हो, बट पूरा डिसीजन आप कैसे बनाओगे? सो यूआईपाथ ने बोला कि भाई आप डीएमएन फॉर्मेट यूज करो, डिसीजन मॉडल नोटेशन यूज करो, और डिसीजन मॉडल नोटेशन फाइल को क्रिएट करो, और उस फाइल के अंदर आप अपने डिसीजंस को क्रिएट कर सकते हो, एंटायर डिसीजंस आप क्रिएट कर सकते हो विच इज रिलेटेड विद द बिजनेस रूल एक्सेप्शन, राइट? और उसे आप अपलोड कर सकते हो, बट the question is here how to create a DMN format file, right? So what we can do, and we can open a Chamunda editor, so we can mention DMN editor. So maybe we'll get a Chamunda editor,
Samunda. So this is BPMN. We'll discuss it later, right? Right now, I'm going to discuss about DMN. Okay, so let's, if you want to create it, so let me show how to create. So once I click on a create, we'll get this type of table, right? In this file, we have a conditions. You can see we have a when, we have a then, right? We have a when, we have a then. If ऐसा होता है, then what we will do, right? What we will consider. Suppose I'm just going to mention the amount here, right? So I have mentioned amount. Let me add a amount in the expressions. In expression, we have a multiple functions and method as well as which we can create directly in the DMN file, right? I want to check something, right? Is blank or anything, right? Whatever I want to apply here, we can add here. But right now I'm only adding an amount here. Okay, so we can add a amount. We can mention what will happen in that case if we have an amount like suppose we want to add amount 10,000. Okay, 1,000. So if amount is 10,000, but now what we can do, we can add. Okay, I think I have mentioned string. So amount is not a string because we want to compare greater than less than. So we should change this. We need to click on it. And here you can see we have a type as well as when we can mention the numbers. Numbers is considered as an integer. We already aware with that. So now we have entered the 1000. We can click on add it here. We can compare, right? What we want greater than, less than, equal to, right? If we consider greater than equal to, you can see the information here also changing, right? So we can mention the greater. We can mention the less than, right? We can mention less. We can mention equal, right? So we can mention greater. Suppose I want to mention 5,000 and I want to add a condition here as well as what will be the action for this. So I can mention less than, less or equal. Okay, and if it is a greater, so मैं ये कह सकता हूँ, I can say that it's a complex approval. ये approve करना इतना आसान नहीं. तो ये return क्या करेगा? ये return करेगा ये approve हो सकता है या नहीं हो सकता. ठीक है, so I can mention approve. I can mention complex. ठीक है. अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे चेंजेस नहीं किया. यहाँ पे मैं आउटपुट ही रहने देता हूँ. ठीक है, ये मैं आउटपुट ही रहने देता हूँ या चेंज नहीं करता मैं, क्योंकि जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट ये होगा. ये हमारा इनपुट है. हमारे पास जो भी अमाउंट उस एक्सेल फाइल में होगा. कौन सी एक्सेल फाइल में? इस एक्सेल फाइल में. ये अमाउंट इस फाइल के पास जाएगा, राइट? और यहां से कंपेयर करेगा कि दिस अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000 और नॉट. इफ इट इज ग्रेटर देन, सो आउटपुट क्या होना चाहिए? ये अप्रूव अमाउंट है. यहाँ पर हमने एक पूरी लिस्ट बना दी कौन सा अमाउंट अप्रूव होगा, कौन सा अमाउंट कॉम्प्लेक्स होगा, कौन सा अमाउंट रिजेक्ट होगा. वी कैन कंसिडर लाइक दैट. ठीक है, तो इस तरह की लिस्ट हम बना सकते हैं. ठीक है, वी कैन सी इट इज एज ए DRD व्यू ऑल्सो. सो यहाँ पर आप पूरा एंटायर डिसीजंस बना सकते हो, राइट? मैं वो नहीं बना रहा हूँ अभी, राइट? आई एम जस्ट वर्किंग ऑन अ DRD बेस्ड ऑन अ टेबल concepts, right? We can create an entire decision flow with DRD and we can connect with the BPMN as well as, right? But right now we are not going to discuss that thing. We are going to discuss only how to create a business rule in this table, right? In the hit policy, we have a multiple information as well as, but I'm not going to select anything right now. I'm just selecting default unique. We have a unique information here. Okay, so let's do one thing. We can download here. So we have if we have created this, right? We can download it from here as well as, right? So I have a file which we can open, right? This is the file which I have created, but let me show you the table. So this is the approval flow, right? We can see we have an amount. If it is a 1000, see I have already built a file, right? So
I'm just going to utilize that file. I'm not going to create an again. So I've just uploaded that file. You can also open if you have a file, you can just instead of click on create, you can click on a open, right? So you can open the old file if you already have some rule file, right? And the same file you can utilize in other projects as well as if it is required, right? So let's do one thing. So we have a file which name determine approval flow. So we can say we have a total amount, right? We have a total amount 1000, 1000, 1000, 1000. And also we have a one more condition here. Billing country, USA, UK, Romania, Bulgaria, right? So what we can do, what I can do, I can mention here approval, approval, reject, reject, approval, right? I can mention like that information as well as, right? So यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक कॉपी बना लेता हूँ इस फाइल की. So मेरी जो एक्चुअल फाइल है वो इम्पैक्ट नहीं होगी. Okay, so instead of billing country, what we can upload? Let's see. हमारी conditions क्या है? What are the conditions? Company name, right? Or I can say role in a company. I can say if person is a senior, then we can approve easily. If person is a junior, then maybe we'll not approve it, right? राइट और ऐसा भी हो सकता है हम कोई अप्रूवल है, फाइनेंस अप्रूवल है, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड अप्रूवल है, तो हम ऐसा भी होता है कि हमारे जो लिस्ट में कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो ब्लैक लिस्टेड होते हैं, राइट? दैट आर ब्लैक लिस्टेड, राइट? कि इन एरियाज में वी आर नॉट गोइंग टू अप्रूव अ लोन, वी आर नॉट गोइंग टू अप्रूव द क्रेडिट कार्ड्स. बेस्ड ऑन दैट आल्सो वी कैन ऐड अ कंडीशंस हियर, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू ऐड अ कंडीशन हियर ऑन अ बेस्ड ऑन अ कंपनी. सो हम क्रेडिट कार्ड हो या लोन हो, कुछ भी हो, राइट? तो हमें क्या करना है भाई, हमें क्या करना है, based on a designation we can give a provide approval of this amount, right? So what we can do, I can mention role in company here, and in expression as well as I'm going to mention role in company as well as here. Now, so what we are going to do, we have this, right? We have this, or we have this information. So we can create an entire list, right? If you have multiple rules. सर बट ये तो एड्रेस है ना सर. एड्रेस रोल इन कंपनी. हाँ सॉरी, I'm sorry, मैंने गलती कर दी. Okay, so we can mention, so we have mentioned some designations, right? ये designation जब भी आएंगे उनके according हम decide करेंगे कि हाँ we need to approve or not. Accountant. And सर नीचे वो अपने अकाउंटेंट आईटी चेंज कर दी. ठीक, कुछ इन्फॉर्मेशन हम फिल नहीं करते, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये अप्रूवल है. ओके, एंड जहां पे कॉम्प्लेक्स है वी कैन मेंशन इट्स रिजेक्टेड. Scientists, we can say approval. Approval and we can say approval. So we have created this list, right? Based on that, we can decide.
right? Based on that, we can decide. We can add animation is here as well as it, but right now it's not required. What we can do based on that, we can decide, right? So we can save it and we can download. Sorry, I don't need to save it. It will automatically save. We can just click on. Okay, so this is a DMN file, decision model notation file. ओके सो ये फाइल हमने क्रिएट की एंड इस फाइल को हम अपलोड कर देते हैं अब यहाँ पे. So let's upload a file here. So we have a Uipath. We have this folder, project folder, and we have file here. Okay, so we have uploaded RPA challenge BRE and we have uploaded this file. We can add, right? So we have this file available here. These are the business rule exceptions, right? Now we can go here, right? We have other conditions here, right? So what we can do instead of conditions, what we can do. Okay, so we have a one activity that is evaluate business rule exception. So let's do one thing. Let's find out evaluate business rule, right? So we can utilize this activity, right? So we can mention here business rule exception evaluate activity. This activity, what it will do, it will get the data from the orchestra, right? So where that file is available on shared, and now we'll get the business rule exception file. So we have a RPA challenge BRE, right? जैसे ही मैं इस फाइल को select करता हूँ, then we can click it here and we'll get total amount, billing country, path to execute, right? So these two information we need to pass and we will get path to execute. That's mean we'll get a decision, right? We'll get a decision. We need to approve or reject, right? So what we can do, this is the in. You can see when we created where we have mentioned input and output. Output will get the decision. In input, we need to provide the information. Based on that, that information go to the DMN file. It will check and based on that, it will provide a information, right? So what we need to check it? Specific content. Right. So what we need to check it, we can copy here. If amount, right? Whatever condition we have mentioned. So let's mention the amount here. If this amount I think it should be considered as a C int. And we can save it. And Without seeing. int is the C int. Conversion is not required for integer. It should be a string. So we can mention toString here. And what we are going to check it here, role in company, right? Save it. And we can save it. Okay, one more thing. Sorry, I just forget. So we can mention approval result. Okay, so we'll get approval result. So whatever it is going to check it here, then we'll get a approval result. ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? Control K. Control K is a shortcut. Control K is a shortcut, right?
To create this, I think it's already there. You can see. ऑलरेडी है क्या? और no, no, already है नहीं, मतलब कंट्रोल के करने से वो create हो गया है. हाँ वो तो मुझे पता है शॉर्टकट. हाँ. ठीक है. Now what we are going to do? So what we are going to discuss? We can check what we are going to check it. It is approved or not, approve or reject. right? If it is equal to approve, then we'll not Approval consider है it. ये कुछ और है, देखना एक बार. Sorry, अप्रूवल है या कुछ और है एक बार. approval here. We can open that file as well as no issues. It's approval. Okay. ठीक. Or if it's a rejected. So let's see if it's a rejected. Okay, mention. So we'll consider as a business rule exception. Request is rejected. Okay, we can add a log message here. If it is not rejected, then it is approved. ठीक है मोहन, ये चीज अभी तक नहीं करते हम प्रोजेक्ट्स में, राइट? राइट सर. ठीक है, चलिए अब रन सर, करते हैं. ये और हाँ, काम को इजी बनाने के लिए तो नहीं ये होगा. इजी ही Short बनाने purpose के लिए है. ना, यहाँ पे आपने कंडीशंस भी ऐड कर दी और ये डायनेमिक हो गया आपका, राइट? अगर बिजनेस रूल में आप कितने, आप एक्सेल में तो आप कंडीशंस ऐड नहीं करोगे, राइट? आपको कंडीशंस यूआईपाथ में ऐड करनी पड़ेगी और भी मल्टीपल चीजें आपको ऐड करनी होगी, तो आप डीएमएल फाइल के अंदर, डीएमएल एक तरह से एक फ्लो क्रिएट करने के लिए यूज होता है. ठीक है, चलिए अच्छा, वो इसको एसेट की तरह मान लेते एक तरह से, क्योंकि हम्म, एसेट की वजह से भी हमें दोबारा से रिकम्पाइल पूरा प्रोजेक्ट नहीं करना पड़ता. ऐसे तो ऊपर वैसे भी यूज समझ. नहीं होती ना बिजनेस रूल एक्सेप्शन में, बट दैट्स फाइन. लेट्स रन इट. Okay, let's do one thing. Let's add a Google point here so we can at least check we have a data available or not. Okay, so we can continue. Okay, this file needs to be closed. Retry क्योंकि ये फाइल ओपन थी. Okay, so let's check it. That data is uploaded or not into the queue. Okay, so we already have our data and let's check the condition. So you can sorry, we can open the process flow. We can add a one toggle point here as well as, right? So we can see the real time value, right? We are getting one. So let's execute till here. Okay, so it is showing some error. One or more error occurred while parsing the expression analysis. Okay. IT specialist. Okay, so we are getting an issue. Let's do one thing.
Sir, analyst has approval and rejection at the same time. वहाँ पर एक That condition is Accountant different, right? Amount is different with analyst. Amount is less than greater than. So we have a two conditions. That's why. Okay, sir. Okay, it's not related with the. It's related with that. Something is wrong with the Yes, sir. DML file. और एंड ऑपरेटर के साथ में ब्लैंक छोड़ सकते हैं. Yes. सर आई थिंक एक्सेल में है ना टोटल अमाउंट में ओनली अमाउंट मेंशन है सर. उससे तो उससे तो उसका कोई मतलब नहीं है. No, that's no. We already mentioned. We are already getting amount. We are just comparing. We are getting amount from the transactions, right? So let's wait. Let's check it. No issues. Something is not. Okay. सर आपने की पॉइंट को तो चेंज किया था आई थिंक. No, sab sahi hai. I think something is with. Uh, so let me stop this. Let me re-execute it. Right. So let me check that file is working fine or not. Let me add some test workflow here. Right. So I can add evaluate business rule exception for testing purpose. We can share. We can utilize amount approval. Okay, billing string, right? So मैंने object mention किया था no. String ही mention किया हुआ है हमने भी. Just wait. ठीक है, इसको check कर लेते हैं पुरानी फाइल को. Result. And we can add a log message here. And we can print a result directly here. So let's do one thing. Let's execute this first independently. It's working or not. Okay, this file is working. Total amount and result is simple approval, right? So something we have done wrong with file. Role नेम and का कॉलम company. का ही हो सकता है कुछ. Okay, so it is working fine. Let's change the file. Let's do one thing. We can individually we can change the file. Billing country, why we are getting a billing country here, right? So it should be a रोल इन कंपनी सर. role in company, right? Wait, change from here.
correct. Total amount. That's fine. Sir, but in sheet it's is mentioned री only amount. री-अपलोड करना पड़ेगा। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। शीट एक्सेल फाइल का डेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So we can try to re-upload it. So maybe we'll get an updated file. Shared. This is rule. And we have this file. So we can remove and we can upload the different file. Okay, so let's go to the Uipath. Let's refresh it. Okay, so we got rolling company, right? That's the thing I think we forget. We have created a flow as well as. Okay, so let's close this. And we can refresh here also. Let's see. Yes, role in company. Actually, we have not focused that we are getting a billing in country, right? So now what we can do? Okay, so this is also we need to make it again. That is in company। it should be a role in company, right? But we can make sure one more time that we are not making any mistakes. So we can check the key name, view transaction, and we can click on view. We have role in company. That's correct. Save it. वो dot to string Dot to string we have not added. So let's add that dot to string. Save. And now we can. Now we don't want to be upload the data again, right? So we already have uploaded. So what we can do, we can comment out that part, right? Where we are reading Excel file, correct? So, and we are uploading it. So we can comment out this because we already updated the data, right? So, and we can comment out this, right? So let's do a thing. Let's execute. Okay, this is arithmetic operations. We are getting an issue, right? From where? Maybe we are not getting a value properly, right? From where? So maybe it is not working in, I think, whatever values we are passing, right? Maybe we are not passing a correct value or something. So that's it's showing arithmetic operations. Maybe it's not what is unable to, or that DMN file is unable to compare that. So as per my understanding, DMN file is not compare the values, right? So that's why it is showing. So that error was previous error was laid with the file. Now it is showing an arithmetic calculation issue, right? So total amount. This is fine. So let's do one thing. Let me check what we are getting at.
Okay, it's working fine. Right. Just give me a second only. There we have studio. Just give me a second. Let me correct it, the arithmetic operation. Definitely will get a issue because of this, because I think we have applied. Hmm. Is working here, right? So we're not getting any values. We're passing. Correct. Okay. That should not be the issue. In that case, something. Okay. Just give me. This C and और convert INT32 एक ही है. आ गया ना arithmetic operation. That is the issue. डेसिमल जो है टाइप में इसीलिए इसका कुछ और कर सकते हैं. वही देखते हैं. Let's do one thing. डबल शायद. देखते हैं. डबल करते हैं. ठीक है. 865 पे ये रन कर रहा है. मैं कह रहा था पीछे जो है ना सिस्टम डेसिमल स्ट्रिंग जो टाइप असाइंड है उनको चेंज कर सकते हैं. नहीं, वो वहां से आ रहा है. डीएमएन से आ रहा है. वी कैन नॉट चेंज दैट. वो हमें डीएमएन में जाके चेंज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू चेंज, बट वहां ऑलरेडी हमने नंबर रखा हुआ है. ठीक है. सो ये अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो दैट्स वर्किंग नाउ. ठीक है. सो आई थिंक वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द इंस्टेड ऑफ, आई थिंक वी हैव
सिस्टम डॉट डेसिमल, नॉट अ सिस्टम इंटीजर। ठीक है, इस बार इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, एंड वी कैन मेक अ चेंजेस देयर। Okay, working fine now. Oh, sorry, by mistake, I have just closed that. Let me open this. Okay, so I think ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जब DMN फाइल बनाई थी, when we create a DMN file, we have selected a number, right? We don't have an option, right? So we don't have an option integer here, right? That's why we selected number. But when we are selecting a numbers here, it will consider as a, when we invoke it, it will consider as a decimal. And what we are doing here, we are converting into the integer. So instead of that, we can convert into the decimal. Okay, so I think that's conversion issue. That's why it is unable to do a arithmetic operation. Right, so let's execute this and let's see. Continue. Right, this is working now. So we can say we are getting approval, right? It is approving. Let's continue. We can remove all the tuple points and let's see. Yes, and we can continue for all the processes. सर आपने चेंज क्या किया सर उसमें? जस्ट हम ना सी इंट कन्वर्ट कर रहे थे, बट वहां पे हमने चेक किया, वहां पे सिस्टम डॉट डेसिमल है, राइट? तो वहां पर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करवा दिया, दैट्स इट। ठीक है, डेसिमल डबल के बराबर होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है? सर्च करो ये तो। और इसको हम एंड में जाके डॉट कन्वर्ट डॉट INT 32 वैसे भी कर सकते हैं, उसमें कन्वर्जन सब कर इंटेलिजेंस चल सकते, जाएगा। कन्वर्जन तो आप कर सकते हो सब कुछ, राइट, एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, हाँ जी मोहन। ठीक है, why it is showing this error? As you mentioned, we can use throw. तो ये बिजनेस रूल एक्सेप्शन में चला गया है, अप्रूवल ये काम सही कर रहा है, बट आपने जो बताया वो अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। वाई? ये इस वजह से नहीं करेगा ना, क्योंकि हमने ये एक्सेप्शन है? नया एक्शन यूज किया है। नहीं नहीं, एक्सेप्शन है इसलिए। एक्सेप्शन आ गया ना, उसने ऑटोमेटिक एक्सेप्शन और नहीं हम डाल दी। डेबग में रन कर रहे हैं, राइट? इसलिए यहाँ पे अगर इसको आप नॉर्मल करोगे तो वो चलेगा। ठीक है, अच्छा। तो वर्किंग फाइन। रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड, लेट्स सी। अब हम चलते हैं, चेक करते हैं हमारे डेटा फ्लो के अंदर चलकर, क्यू के अंदर क्या वहां पर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस रूल एक्सेप्शन से फेल हुआ है। फेल्ड, राइट? सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, फेल, राइट? सो लेट्स सी क्या रीजन है इसका, वो चेक कर लेते हैं। रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड, ठीक है, और ये एक्सेप्शन टाइप क्या है? बिजनेस रूल एक्सेप्शन है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, तो दैट्स वर्किंग फाइन। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम जितना डेटा हम अपलोड करना चाहें वो हम कर सकते हैं। ठीक है, हम जितना डेटा अपलोड करना चाहें, कहाँ पे? डीएमएन फाइल के अंदर हम डेटा ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको मैं अगर डिप्लॉय कर देता हूँ, इस प्रोसेस को मैं डिप्लॉय कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर प्रोसेस को डिप्लॉय कर देता हूँ। लेट्स सी, लेट्स डिप्लॉय इट। इसको हम डिबग मोड में रन नहीं करेंगे अब, और जो एक्सेल फाइल है
एक ये हम मेंटेन कर लेंगे कि हमें डेटा अपलोड करना है नहीं करना है। is then will upload. If you make it false, then will not upload. So ये कंडीशन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक लॉग मैसेज। डेटा नॉट अपलोडेड। ठीक है, चलिए। क्या हमने ये कुछ नहीं किया, ये मैंने सिर्फ कंडीशन लगा दी है कि हमें डेटा अपलोड करना है नहीं करना है बार बार, क्योंकि हम जब भी इसे बार बार रन करेंगे तो वो एक्सेल फाइल बार बार रीड होगी और डेटा हमारा बार बार अपलोड होगा, राइट। सो मैंने ये कंडीशन मेंटेन कर ली, जब हमारा डेटा खत्म हो जाएगा तब हम अपलोड करेंगे, जब डेटा होगा तब हम अपलोड नहीं करेंगे। तो वहां पर हमने एक वेरिएबल पास कर दिया है, इज अपलोड रिक्वायर्ड और नॉट। अगर वहां पे ट्रू हम दे देंगे तो वो अपलोड करेगा, फॉल्स दे देंगे तो अपलोड नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, अभी दैट्स हमने इट। मैनुअली किया हुआ है। अभी हम वो अपलोड कर रहे थे ना डेटा, यहाँ पे एक्सेल फाइल तो ऑलरेडी कर रहे थे ना। रीड रेंज बल्क अपलोड हमने यूज किया ही था डेवलप करते टाइम पे, हाँ, राइट। बस कोई इ- इफ इस कंडीशन में ऐड कर दिया है। नहीं, इस डेटा अपलोडेड कहाँ से कंडीशन चेक कर रहा है? अभी ऐड किया ना आपके सामने। नहीं, वो कब, वो किसके बेसिस पे वो ट्रू होता है? वो हम मैनुअली देंगे ना, यहाँ पे हमने ट्रू दिया हुआ है, एक वेरिएबल अच्छा, क्रिएट किया है। वही मैं कह रहा हूँ, मैनुअली। हाँ, अच्छा, मैनुअली दिया है हमने हमने यहाँ पे ट्रू। फोर्सफुली डाला हुआ है, हाँ, क्योंकि फोर्सफुली हमें डाला पता है, है। करेक्ट। ठीक है। There we have is, yeah, इसका scope we can change. Okay, so what we can do, we can publish this to the orchestrator. Next, next, and publish. Okay, so we have done the deployment. We can add a process here. RP RPL Let's see, it is deployed or not. Tenant, package. It is not showing. Why? क्या नाम है उसका, दोबारा दिखाना। ठीक है, नाम तो रोबोटिक एंटरप्राइज फ्रेमवर्क RPA चैलेंज है, right? But it is not showing. आ गया सर, ये एक्मे वाला आ रहा है। नहीं 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 आया, नहीं, कोई हाँ, इशू ये नहीं। तो एक बार दोबारा से सक्सेसफुली हो जा पब्लिश। रहा है वो पब्लिश। हाँ, दोबारा पब्लिश कर देते, नो इश्यूज, कोई इशू होगा। लेट्स मेक इट ओके। पर्सनल फीड हमको टेनेंट में करना था, हमने पर्सनल में कर दिया। लेट्स
डू इट। पर्सनल फीड में चला गया होगा, वहां पे होगा। दैट्स फाइन, वी कैन पब्लिश इट अगेन। Okay, that is available now. So we can go to the shed, we can go to the process automation, and we can add or OB. this one. चले रन करें। ठीक है, अब हमारे पास डेफिनेटली क्यू में डेटा आएगा। व्यू ट्रांजैक्शंस, ठीक है, डेटा अपलोड हो गया। सक्सेसफुल। failed, ठीक है, this is a business rule exception, right? So we have deployed. Now what we can do, if you want to add some more conditions, right? If you want to add a more conditions, in that case, what we can do, we can add that condition into the DMN file, right? And we can upload it because our project is already deployed. ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी डिप्लॉयड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स के लिए हमने यहाँ पे कंडीशंस ऐड ही नहीं की है, राइट? नाउ आई वांट टू ऐड दैट कंडीशंस हियर एज वेल एज, राइट? सो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स डू वन थिंग। अब इनके लिए अगर मैं बात करूं, लास्ट में जहां पर बस साइंटिस्ट नहीं है, मेडिकल इंजीनियर नहीं है, राइट? वो ऑटोमेटिकली अप्रूवल पे जा रहा है, राइट? आई वांट टू ऐड, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो भी अप्रूवल, जहां पे बाय डिफॉल्ट 1000 से रेट कुछ भी नहीं है, वो अपने आप अप्रूवल पे जा रहा है, राइट? सो मैं यहाँ पे अगर रिजेक्ट कर दूं या फिर यहाँ पे कुछ और कंडीशंस और ऐड कर देता हूँ, राइट? लेट्स सी। रिफ्रेश करते हैं एंड कुछ और कंडीशंस को देखते हैं यहाँ पे। सो वी कैन सी वी हैव अ सक्सेसफुल हियर programmer, right? If programmer is there, right, I want to add one more conditions. अगर इन फ्यूचर यहाँ पर अगर प्रोग्रामर भी आता है, राइट? और अगर यहाँ पर सिर्फ प्रोग्रामर है, हम ये वाली कंडीशन चेक ही नहीं करना चाहते, देन इट विल बी रिजेक्टेड। और इनके अलावा कुछ भी आता है, वी कैन कंसिडर एज ए अप्रूवल। और एक और ऐड कर देते हैं कोई भी, फॉर एग्जाम्पल हम ये लेते हैं HR मैनेजर। तो हम इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं।
ओके सो ये रूल्स हमने ऐड कर दिए, हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉयड है, राइट? ये नए रूल्स हमने ऐड किए यहाँ पे एंड वी कैन डाउनलोड दिस विथ वर्जन 2 यार। ठीक है, हाउ वी कैन अपलोड that rule? We can go to the again orchestrator. You can click on shared, go to the shared, and you can click on business rule exception. We have this already. We can click on add it, and we can cross this and we can upload it. ये न्यू वर्जन का ऐसा कुछ नहीं है? वर्जन 1.2 आ गया ना? वो तो हमने वहाँ लिखा है, यहाँ पे नहीं नहीं, ऐसा हमने अपग्रेड नहीं लिखा है, वो हमने अपने फाइल के नेम में लिखा हुआ है। यहाँ पे वर्जन मिलेंगे आपको 1.0, 1.1, 1.2, 3 फाइल अपलोड कर चुके हैं हम इसकी, राइट? ये वर्जन अपने आप मेंटेन हो रहा है, ये मैंने मेंटेन नहीं किया है, राइट? इट विल मेंटेन बाय UiPath ओनली। इसमें डायरेक्ट राइट 3 डॉट पे क्लिक करके अपग्रेड वर्जन एडिट अगर करके सेम नाम है हो सकता है नहीं या नहीं? नहीं, अपडेट करने का नहीं है हमारे पास अभी। ठीक है, इट्स फाइन, वी हैव अपलोडेड अगर ये द लोकेशन से ही उठा रहा है, अगर सेम नाम हो तो हर बार नहीं उठाएगा? हमको मैनुअली ये अपलोड होता है या फिर लिंक करके रखता है लोकेशन अपलोड को? हुआ। नहीं अपलोड हुआ है ना, अभी एक्टिव वर्जन अच्छा। हमारा 1.2 है ना, तो इसी को उठाएगा वो, राइट? सो लेट्स डू वन थिंग, क्लिक ऑन ऑटोमेशन, लेट्स क्लिक ऑन जॉब्स, ठीक है। ठीक है, इसको रीस्टार्ट करते हैं। डेटा फिर से अपलोड होगा एंड विल सी दिस टाइम। हमने एक बार देखा प्रोग्रामर अप्रूव था, राइट? लेट्स सी प्रोग्रामर अप्रूव होता है नहीं होता है इस बार, और HR मैनेजर अप्रूव होता है नहीं होता है। सो वी कैन गो टू द क्यू, वी कैन सी क्यों हमने क्या खाली कर दी? हाँ पूरी कंप्लीट हो चुकी थी ना, इसलिए दोबारा अपलोड हो गया। नया डेटा आएगा, दोबारा से चेक होगा। स्टार्ट in progress, let's wait to complete the everything। और अगर कंडीशन मैच कर रही होगी, हमने कंडीशन चेक नहीं करी, सिर्फ हमने ऐड कर दिया, अगर मैच कर रही होगी तो वो भी लेट्स सी कंडीशन मैच कर रही है नहीं कर रही है, और अगर मैच होगी तो कुछ नहीं कर सकते, अप्रूव मैच चल जाएगा, वो नहीं होगी तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट की 2 कंडीशन है जो हमें चेक करनी है। सक्सेसफुल HR मैनेजर भी, क्योंकि आई थिंक यस प्रोग्राम वाली फेल हो गई, राइट? सो दैट्स नॉट मैच एज पर द कंडीशन, right? We have a programmer and request is rejected because of business rule exception. Okay, so that's done for the business rule exception with DMN, and we can stop recording.